Hello everyone. Let's see what are the Kepler's law of planetary motion. Okay, so we will go one by one with the diagram. Okay, let's see. First, Kepler's law. Kepler's first law, it is said that the orbit of planet is an ellipse with the sun at one of the foci. ओके इसका क्या मतलब है वो हम लोग समझते हैं. लेट्स सी फॉर एग्जांपल वी हैव दिस डायग्राम. ओके द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट. ओके तो प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके राइट हियर इज द like position for any planets is revolve around a particular path. Okay so this path is called the path of revolution and this path follows is a ellipse. Okay ellipse की डायग्राम कैसे होते हैं. पर्टिकुलरली इसके जो है दो फोकस होते हैं. ठीक है अगर इसकी बात कर ले तो ये इस तरीके से एलिप्स होता है और अगर हम एवरेज डिस्टेंस निकाले एट सेंटर तो इट कैन बी हियर और इट कैन बी हियर. ठीक है मतलब क्या हो सकता है इसकी जो है अगर एवरेज डिस्टेंस निकाले दिस इफ वी एड ऑल द डिस्टेंस दिस डिस्टेंस. ओके अगर वो एवरेज निकाल करके हम कोई सेंटर निकालें तो ये सेंटर एक यहाँ पे हो सकता है और एक यहाँ पे हो सकता है. क्लियर है. ओके तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि भाई इसके जो फोकस है ठीक है इसके फोकस जो है द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. तो ये जो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है वहाँ पे सन की पोजीशन क्या है एट वन ऑफ द फोकाई. ठीक है तो एक यहाँ पे हो सकता है एक फोकस यहाँ पे हो सकता है. ठीक है और यहाँ पे हो सकता है. बोथ आर राइट. ओके तो एटलीस्ट इट इज एट दी वन ऑफ दी फोकस. ठीक है आई होप आपको फर्स्ट जो है मतलब समझ में आया होगा. आई विल रिपीट अगेन द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स. ओके द ऑर्बिट इज elliptical with the sun at one of the foci. So the position of sun shown here is as and it can be here and also it can be at another foci. Okay so at any one of the focus it can be seen. Okay now we will see the second law. Okay Kepler's second law, it is said the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. Okay so first of all let's see the line joining the planet and the sun. Okay so this is the line joining. Okay here this is the our sun and here it is a planet. Okay so line joining is the this one. Okay so this is the line which join the sun and the planet. Okay so line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. Okay so this line if travel from A to B and C to D in equal interval of time then this area can be equal. Okay once again if the distance if this line joining is travel this line joining travel from A to B or C to D if the time is same. Let's say for example from A to B it is time T and the same time is here. In equal interval of time interval is same then the area this one this area and these area are equal. area here this area and this area are equal. The line joining the planet and the sun, so line joining the planet and the sun from here it is S to A and here it is CS. The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. So it sweeps equal area from here to here, this area ASB, and from C to D the area CSD. These two area are equal. Clear है. तो ये कैप्लर्स के सेकेंड लॉ थे. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड लॉ. एंड थर्ड लॉ it is said the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. Square of the period of revolution. So first of all we will see what is period of revolution. So time required to complete one complete revolution, it is the time period. And we denote it a capital T. हम इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल T से.
Okay, so here it is said square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of planet from the sun. So we will see what is the mean distance. तो mean distance again हम लोग ने यहाँ पे use कर चुके हैं. Mean distance is nothing but the distance from focus to द प्लानट. ओके, तो इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने मीन डिस्टेंस बोला हुआ है. एंड मीन डिस्टेंस जो है हम आर से डिनोट करते हैं. क्लियर है. द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, सो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड the sun is directly proportional to the cube of the mean distance, to cube mean distance. Okay, so t square is proportional to r cube. Yes, okay, so this is true. T square proportional to r cube, where t is the period of revolutions and r is the mean distance of planet. So Kepler's के थर्ड लॉ क्या कह रहे हैं, the square of its period of revolution, square of the period of revolution is directly proportional to the cube of the mean distance of planet from the sun. Okay, अब इसको हम दूसरे वे में भी कह सकते हैं. इस लॉ का मतलब जो है from another way, okay, on which is if we just take r cube to the denominator of t square, then this will yield a constant. Okay, so always this t square upon r cube, this yield a constant, and that constant is same for every planets. Okay, and every planetary motion. So these three are the Kepler's law of planetary motions. I hope आपको ये जो है समझ में आए होंगे. If you are still confused about any of these law, then you can comment down and we'll try to illustrate in some other way. Okay, so thank you so much for watching.